Hello everyone. Today we will discuss about isotopes, isobars and isotones and how to find out these. First of all, we will discuss isotopes. Isotopes are the atoms of same element which have same atomic number but different mass number. For example, hydrogen exists in three isotopic form. First, protium, 1H1. Atomic number A Z कितना दे रखा है 1. जैसे कि हमने कल वीडियो में मैंने रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था कि किसी भी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन मैंने बताई थी X Z A, जहाँ X एनी एलिमेंट ऑफ एटम और Z एटॉमिक नंबर एंड A मास नंबर. तो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1 हो गया एंड मास नंबर A इज इक्वल टू 1. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स also 1 because yesterday we will find out number of protons, number of neutrons and number of electrons. Number of protons is equal to number of atomic number and number of electrons also is equal to number of atomic number in the case of neutral atom, and number of neutrons mass number 1 minus number of protons 1 is equal to 0. and second isotope है deuterium. One D2. Here atomic number also 1 and mass number 2 and number of protons 1 and number of electrons also 1 and number of neutrons mass number 2 minus number of proton 1. तो यहाँ पे number of neutrons is equal to 1. and third isotope is tritium. One T3. Atomic number Z
is equal to 1, mass number A is equal to 3, and number of protons one, and number of electrons also 1, and number of neutrons is equal to number of neutrons कैसे फाइंड आउट करते हैं? मास नंबर 3 माइनस number of protons 1 is equal to number of neutrons 2. So here we can see that number of protons, number of electrons also same, but number of neutrons in the case of protium it is equal to 0, and in the case of deuterium is equal to 1, and in the case of tritium number of neutrons is equal to 2. Then we can say that number of neutrons are different. So these are isotopes. And the second example we can take a carbon. Carbon also exists in 3 isotopic forms. Carbon also exists in 3 isotopic forms. Uh, 6C12 and 6C13 and 6C14. Here atomic number Z is equal to 6, same, but mass number A in the case of first it is 12, second 13 and 14. It is different. So number of neutrons six, 7, 8 respectively. So these are also carbon isotopes forms. And third example we can take chlorine. Chlorine also exist in 2 isotopic forms. एक होता है 35Cl17 और एक होता है 17Cl37. So chlorine also exists in 3 those 2 isotopic forms. So here number of neutrons also different. तो ये था आइसोटोप्स के बारे में. नेक्स्ट हम आइसोबार्स के बारे में डिस्कस करते हैं. आइसोबार्स are the atoms of different elements which have same mass number but
different atomic number. For example, carbon 6C14 and 7N14. Here atomic number is 6 and mass number is 14. Number of protons 6, number of neutrons कितना होगा 14 minus 6 is equal to 8. And here atomic number 7, mass number 14, number of protons 7, number of neutrons 14 minus 7 is equal to 7. तो on mass number कैसे कैलकुलेट करते हैं? Number of proton plus number of neutron. Here mass number, what is mass number? 6 plus 8, 14. Here plus neutron, proton number 7 plus neutron number 7, also 7. So mass number, what is mass number? 14. So we can say that number of protons are different, but the sum of proton and neutron are same, यानी कि mass number are same. Another example is AR18, AR40 and 20 CA40. Here number of atomic number is 18 and mass number 40, number of protons 18, number of neutrons, mass number माइनस यानी कि मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, तो कितना हो गया 12. हियर नंबर ऑफ atomic number 20 and mass number 40, number of protons 20 and neutron mass number minus proton number 20. Mass number 40 minus proton number. तो यहाँ पे हम सम निकाल सकते हैं. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है 18 और न्यूट्रॉन है 12, तो कितना हो गया ये 30. हियर मास नंबर प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर. प्रोटॉन नंबर here proton number is 20 and neutron also 20, then it is 40. Here number of neutron is 22, so it is 40. Then here also here number of यानी कि mass number are same, so we can say these are isobars. Next we will move isotones. Isotones. Isotones are the atoms of
different elements. Different elements with same number of neutrons but different mass number. For example, Si 14, 31, 30 and phosphorus 15, 31 and sulfur 16, 32. So here these are isotones. Here number of atomic number Z is equal to 14, mass number 30, number of protons 14, तो number of neutrons कितने होंगे 30 minus 14, 16. Here here atomic number is 15, mass number is 31, number of protons 15 and number of neutrons 31 minus 15 is equal to 16. Here mass here atomic number 16, mass number 32, proton number 16 and neutron number 32 minus 16 is equal to 16. So here number of protons, number of neutrons are same 16, 16, 16 and we can say these are isotones. We find isotopes, isomers and isotones. तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं इनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, और आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, एंड आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर होता है. और तो ये तो हमारे आइसोटोप्स, आइसोमर्स एंड आइसोटोन्स के बारे में. गाइस ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.